Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, dear friends, our today's topic is role of the government in health. Dear friends, in a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? First of all, let's see what is health. Dear friends, we can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. तो प्यारे बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 18 और 19 को देखें. वहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे. आप उनको गौर से देखें. ये डिफरेंट सिचुएशंस डिपिक्ट करते हैं जिनमें कि लोग रहते हैं या जिन सिचुएशंस को हम डेली लाइफ में फेस करते हैं. तो हमारा आज का जो सब टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हेल्थ. तो पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ क्या चीज़ है, हम हेल्थ किसको कहते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. मुख्तलिफ तरीक़ों से हम हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. सेहत का मतलब है, हेल्थ का मतलब है कि हम बीमारी और इंजरीज से सेफ हूँ, उनसे फ्री हूँ, हम बिल्कुल तनोमंद हूँ, सेहतमंद हूँ. तो इसको हम हेल्थ कहते हैं, कोई बीमारी ना हो. बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़. तो ये सिर्फ डिजीज़ फ्री होना ये इतना ही नहीं है. ये डिजीज़ के बारे में ही हेल्थ नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इस के साथ रिलेटेड है. You may have associated only some of the situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. क्या क्या मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को असर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉपुलेशन और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. अगर हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेहतमंद माहौल में रहते हैं जहाँ आलूदगी नहीं है, आलूदगी से पाक माहौल है, जहाँ आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वो अवेलेबल है आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ जो लोग रह रहे होंगे इस सिचुएशन में, तो वो हेल्दी होंगे, वो सेहतमंद होंगे. जब आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हों, जब आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हेल्दी होंगे उस एनवायरनमेंट में. इसके बरक्स, इसके अपोजिट
On the other hand, if people do not get adequate food to eat, अगर लोगों को खाने के लिए पूरी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, या उनको रहना पड़ेगा क्रैम्प्ड कंडीशंस में, बदहाली की सूरत में, गुर्बत के हालात में उनको रहना पड़ेगा, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस. अगर वो उन हालात में रहेंगे जहां उनको खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, पानी साफ नहीं मिलेगा, माहौल साफ नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जहां वो झुग्गी झोंपड़ी वाली सिचुएशन होगी, तो ऐसे माहौल में क्या होगा, जो लोग वहाँ रहते हैं दे विल बी प्रोन टू इलनेस, उनको ज़्यादा बीमारियां लगने का खतरा लाहिक हो सकता है. तो प्यारे बच्चों, all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. जो कुछ भी काम हम कर रहे हों, किसी भी सिचुएशन में हम हों, कोई भी काम हम कर रहे हों, किसी भी फील्ड में हों, तो हम सब ये लाइक करेंगे, हम सब ये चाहेंगे कि हम सेहतमंद हों, एक्टिव हों और इन गुड स्पिरिट्स हों, हम अच्छी तरह से रहें, खुश हों, खुश खुरम हों. सबकी ख्वाहिश यही होती है. इट इज़न्ट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंक्शियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. अगर आप स्ट्रेसफुल रहें, परेशान रहें, इनएक्टिव रहें, डल रहें लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम के लिए, तो ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं माना जाएगा. तो आप का जो हेल्थ है, आपकी सेहत है, तो उस पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हम चाहेंगे कि हम जहनी दबाव के बगैर रहें, हम खुश खुर्रम रहें और अपना काम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करें. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ. ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, कि हम स्ट्रेस फ्री हों, हम एक्टिव हों, हम एंग्जाइटी फ्री हों, हम सिक्योर्ड ना हों. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ. डियर फ्रेंड्स, let's examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situations expressed in the first and second columns. See page number 20 of your textbook. There are two columns, first and second, and there are different situations given. First of all, we will take column number 1. The first point there is, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Okay, approximately 15,000 new doctors qualify every year. You please note these points. Number 2, healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. Now, point number 3. India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare the best in the world. Number 4, India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. So all these positive points you may note in your notebooks for future reference. Now the column B. Let's have a look on the column B. Point number 1. Most of the doctors settle in urban areas. The doctors we have, most of them settle in
urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. Point number 2. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number isn't decreasing. Point number 3. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. And point number 4. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. So these are all minus points. Dear students, you please revisit page number 20 of your textbook and compare and contrast the situations expressed in the first and second columns. Can you provide a title to these columns? Dear students, in order to prevent and treat illness, we need to appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. Well, dear students, India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. Okay, we will go into details in the next video, inshallah. Till then, take care and goodbye.